Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajagacharya Stutara Sutta Shishimadhi Divine Grace. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Ananta Gauri Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopinath Shyama Radha Kunda Giri Gauravan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganges Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai. Nitai Gaura Pramanandi. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories to Shishi Guru Shri Gauranga. Nama Om Vishnu Padya Krishna Prithai Bhutala Srimati Bharatita Shamata Vasti Krishna Parashikana Shakti Bhutala Narayana Namaskritya Aram Chaiva Nurutama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat Nashta Praisha Padesu Dityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Suluti Bhakti Bhavati Naishtaki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnana Timirandasya Jnanandjana Salakaya Chakshurunnitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapasam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadandikam Vandeham Sri Gurun Sri Yudapadakamal Shri Gurun Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vasikan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagatpati Gopisara Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Bhakti Vrindavanishwari Kesavan Siti Devi Punamami Hari Priya Vanchakal Kataru Yasta Vipa Sindhu Vacha Patijanam Pavanegyo Vaishnayo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Antara Srimad Bhagavatam Ki Srila Prabhupada Ki Hare Krishna. Continue our reading from Srimad Bhagavatam. Canto 10. Chapter 46. Uddhava visits Vrindavan.
Continue from श्री text. उद्धव की वृंदावन यात्रा। Text number 6. श्लोक संख्या 6। Text 6. 46. 10:46:6। Text number 6. Dharayantyati krishrena praya pranan katam chana pratyagamana sandeshair balavyome mad atmika dharayantyati krishrena praya pranan katam chana pratyagamana sandesairi balavyome madatikam dharayantyati krishrena praya pranan katanchana pratyagamana sandesairi balavyome mad atmika dharayanti. They hold on. धारण करती हैं। Atikrishrena. With great difficulty. बड़ी कठिनाई से। Praya. Barely. प्रायः। Pranan. To their lives. अपने प्राणों को। Katanchana. Somehow. Pratyagamana. Of return. Sandisai. By the promises. Balavya. The cowhead women. Me. My. Mat Almika, who are fully dedicated to me. Translation and the purport. Purpose disciples. Simply because I have promised to return to them, my fully devoted cowhead girlfriends struggle to maintain their lives somehow or other. अनुवाद। क्योंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसीलिए मुझमें पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियां किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
Yes. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, although the gopis of Vrindavan were apparently married, their husbands actually had no contact whatsoever with their supremely attractive qualities of form, taste, fragrance, sound, touch, and so on. Rather, their husbands merely presumed, these are our wives. In other words, by Lord Krishna's spiritual potency, the gopis existed entirely for his pleasure, and Krishna loved them in the mood of a paramour. In fact, the gopis were manifestations of Krishna's internal nature, his supreme pleasure potency. And on the spiritual platform, they attracted the Lord by their pure love. Nanda Maharaj and Mother Yasoda, Lord Krishna's parent in Vrindavan, had also attained the most exalted state of love for Krishna. And they too could barely maintain their lives in his absence. Thus, Uddhava will also give special attention to them. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यद्यपि वृंदावन की गोपियां कहने को तो विवाहिता थी, किंतु उनके पति उनके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जैसे अति आकर्षक गुणों से कोई संपर्क नहीं रखते थे। उनके पतियों ने केवल यही मान रखा था कि ये हमारी पत्नियां हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से समस्त गोपियां उन्हीं के आनंद के लिए थी और भगवान श्री कृष्ण उनसे परकीय प्रेम करते थे। वस्तुतः गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक प्रकृति, उनकी परम आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्तियां थीं और आध्यात्मिक स्तर पर वे अपने शुद्ध प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को आकृष्ट कर रही थी। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद महाराज और यशोदा को भी भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रेम दशा प्राप्त थी और वे भी भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में किसी तरह से जीवित थे। अतः उद्धव जी इनकी ओर भी विशेष ध्यान देंगे। So, Krishna is explaining the state of the gopis' existence. तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मनोदशा का चित्रण कर रहे हैं। The gopis have intense love for Krishna. गोपियां भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत अनुरक्त थीं। And then that when Krishna left Vrindavan, और जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए, the love they have for Krishna उनका जो प्रेम था श्री कृष्ण भगवान के लिए and the pain of separation they feel और जो विरह की अग्नि वो महसूस कर रही थी, could immediately kill them. वह उनको तुरंत मार सकती थी। They would have died. वो मर गई होती, but only one thing keeps them or stops them from dying. लेकिन वो जीवित थी किसी एक कारण से। Why we are not dead? क्यों उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा? Krishna said here, because of my promise to the gopis that I'm coming back. भगवान कृष्ण बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आऊंगा। Because of that, they are struggling to maintain their lives, expecting one day he will come back. और इसलिए गोपियां अपने
प्राण को बनाए रख रही थी हर प्रकार का संघर्ष करके। That's the only reason why they are living. They will have died. मात्र यही कारण था कि वो जीवित थी, नहीं तो वो कब की शरीर त्याग दी होती। Their death will be selfish. अगर उनकी मृत्यु होती तो वो स्वार्थपूर्वक होता। But Krishna is coming back. लेकिन भगवान कृष्ण आ रहे हैं। Krishna says he's coming back. कृष्ण बोले हैं कि वो आएंगे। Therefore they are waiting for Krishna. इसलिए वो उनका इंतजार कर रहे हैं। With difficulty. बहुत संघर्ष से। Expecting one day he will come back to us. या आशा करते हुए कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर आएंगे। What is the relationship the gopis have with Krishna? क्या है ये संबंध श्री गोपी जन का भगवान के साथ? Krishna used the word here, balavyaha. यहाँ पर शब्द इस्तेमाल आया है वल्लभ्यः। Even though they are women of the 𝐾𝐽 community, still they belong to me. यहाँ तक कि ये गोपियाँ वृंदावन की वासियाँ थीं, लेकिन वो भगवान कृष्ण की संपत्ति थी। Their husbands actually have no contact whatsoever with their supremely attractive qualities. उनके पति उनके आकर्षित गुणों से कोई संपर्क नहीं रखते थे। Qualities of form, जैसे रूप, taste, रस, fragrance, गंध, sound, शब्द and touch. और स्पर्श। The gopis are married in a name only. गोपियाँ मात्र नाम से ही उनकी शादी हुई थी, नाम मात्र से। We mentioned the other day, हम लोग एक दिन ये बात कर रहे थे, उस दिन Kamsa was interested. कंस की इच्छा थी इन गोपियों को अपना बनाने की। And to cheat Kamsa, और कंस को धोखा देने के लिए Yogamaya made arrangement योग माया ने ऐसा किया that they are married. ताकि उन्होंने विवाह करवा दिया। That is one reason. यह एक कारण है। Another reason, दूसरा कारण है, there is a difference between husband and wife love and paramour love. यहाँ पर अंतर होता है पति और पत्नी के बीच जो संबंध और प्रेम होता है, और जो एक अविवाहिता स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध होता है। Please don't forget. आप भूलिए मत। What is Krishna's position? भगवान कृष्ण कौन है, उनकी क्या स्थिति है? What is Krishna's position? श्री कृष्ण है कौन? Supreme enjoyer. पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान। He is the supreme enjoyer. सबके मालिक हैं, वो भोक्ता हैं। Therefore, इसलिए he made his supreme arrangement for supreme enjoyment. वो परम भोक्ता हैं, तो उन्होंने अपने अनुसार परम भोग की व्यवस्था भी की हुई है। Paramour lovers, जो परकीय प्रेम है, प्रेमी हैं, the relationship is more tasty. उनका संबंध अत्यंत सुमधुर होता है। So Krishna has, he said, Parakiya and Swakiya rasa. तो भगवान श्री कृष्ण परकीय और स्वकीय रस का आस्वादन करते हैं। Swakiya rasa स्वकीय रस is feeble. यह थोड़ा सा छोटा है। Parakiya rasa, परकीय रस supreme. ये महान है, अति महान है। Therefore, इसलिए Krishna made this arrangement. भगवान कृष्ण ने इस प्रकार की व्यवस्था की Let them be so-called married. कि ये जो गोपियां हैं, इनका विवाह जैसा दिखे बाहर से, But लेकिन when they are thinking of their boyfriend, वो अपने मन में हमेशा अपने प्रियतम के बारे में चिंतन करेंगी। I remember Srila Prabhupada said, मुझे ध्यान आ रहा है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, a woman who has a married woman who has a boyfriend
अगर कोई विवाहिता स्त्री है और उनका कोई बॉयफ्रेंड है, that is considered abomination. यह बहुत ही खराब समझा जाता है. But that relationship is sweeter than the husband relationship. It's sweeter. Krishna. The relationship between when a married woman is having a boyfriend, that relationship is sweeter than the relationship he has with the husband. लेकिन हम देख सकते हैं कि उस स्त्री का संबंध अपने पति से अधिक मधुर होता है अपने बॉयफ्रेंड से. It's easy for me to understand it because in my village they have this system. बोले मेरे लिए ये समझना सरल है क्योंकि मेरे गांव में ऐसा मैंने देखा है, होता है. So they have a saying. तो वो कहते हैं the husband's food is kept on the floor. The husband's food is kept on the floor. The boyfriend's food is kept on the table. पति का जो पैर है वो धरती पे होता है, लेकिन जो बॉयफ्रेंड का पैर है वो धरती के ऊपर. माफ करिएगा. तो जो पति को भोजन मिलता है वो जमीन पर रख के मिलता है. You don't have the experience, so he doesn't know. लेकिन जो उनके जो प्रियतम हैं, जो लवर हैं, उनका प्रसाद जो होता है वो उनको बेड पे मिलता है. It's normal. It's normal experience. ये समानता अनुभव है. You know, even my village, I still have a girlfriend there. The relationship. Because that is the culture. It's a normal culture there. और हमारे गांव में देखा है ऐसा होता है. When I was still there in the village. So that arrangement was there. That somebody is married, today is a boyfriend. But there is no violation. There is no carnal relationship. They don't have. इसमें कोई दोनों संबंध आपस में अच्छे से चलते हैं. But the rasa is sweeter. जो रस है वो अधिक मधुर होता है परकीय भाव में. So Krishna knows that. तो भगवान कृष्ण को ये पता है. Therefore, इसलिए he also made the arrangement like that. Some are married, some are not married. उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है. कुछ जो गोपियां हैं उनका विवाह हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है. So when Krishna called them, जब भगवान उनको बुलाते हैं and they are attracted to go to the Krishna, और इस प्रकार गोपियां उनकी ओर जाती हैं, the attraction is very, very intense. और यह आकर्षण होता है, यह बहुत ही अनुरक्त होता है, प्रभावशाली होता है. And Krishna came to test that love, और भगवान कृष्ण इसी का आस्वादन करने के लिए to teach us, यह करते हैं और हमको to शिक्षा teach देने के us लिए what he's doing. हम सिखाएंगे क्या कर रहे हैं वो. So here we see तो यहाँ हम देखते that हैं the gopis are said to be married. कि गोपियां लग रहा है कि उनकी शादी हुई है. But Krishna said, even though they are women of the cowhead community, still they belong to me, Krishna. और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ तक वो कहने के लिए विवाहिता थी, लेकिन वो उनकी ही शक्ति है. So the husband does not have any relationship with them. तो पति का कोई भी संबंध या संपर्क नहीं था उन गोपियों से. They are to be enjoyed by me alone. और वो मात्र भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए ही थी. Because they are manifestations of my own form, mat admika. क्योंकि वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ही मत आत्मिका आंतरिक प्रकृति की शक्तियां थी. As incarnations of supreme bliss. और वो आह्लादनीय शक्ति की अभिव्यक्तियां थी, उनकी औलाद थी. They are my own internal energy, Swarupa Shakti. वह श्री कृष्ण की आंतरिक प्रकृति स्वरूप शक्ति की अवतार थी. Appearing as the essence of my pleasure potency, Ladini Shakti.
वो आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। Although I am Atmarama, I derive more pleasure from them. यानी कि मैं आत्मा राम हूँ, लेकिन मैं उनके शुद्ध प्रेम से अधिक प्रभावित होता हूँ। For this reason, I consider them more deserving of my mercy than even my own self. और इसलिए मेरी कृपा उन पर अधिक होती है, मेरी स्वयं की रानियों से अधिक। These gopis are mine because they are the object of my enjoyment. इनका विवाह हुआ है, लेकिन ये मेरे भोग के लिए बनी हुई हैं। Or the gopis' very selves are absorbed in me in the sense of their always hankering to give pleasure to my mind. और इन गोपियों का मन सदैव मुझ में लगा हुआ है और वे मेरे मन को आनंद देना चाहती हैं। So these are special devotees of Krishna. तो ये बहुत ही खास रस है। They are expansions of Srimati Radharani. और ये गोपियाँ श्रीमती राधा रानी की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। Nobody can touch them. Nobody. और इन गोपियों को और कोई भी कभी छू नहीं सकता। Including the head of the gopis, Srimati Radharani herself. Srimati Radharani herself. श्रीमती राधा रानी भी उनको नहीं छू सकती। She is said to be married to Abhinaya. उनका विवाह बोला गया है कि हुआ है अभिमन्यु के साथ। They never one day touch themselves, even by mistake. लेकिन अभिमन्यु से उनका कभी भी कोई भी स्पर्श या संपर्क नहीं हुआ है। Never one day. कभी नहीं। Never. कभी भी Never touch, even by mistake. कभी भी गलती से भी उनका कोई स्पर्श नहीं हुआ। So that is the position. तो यह स्थिति है। They are Krishna's own expansion. भगवान कृष्ण की ही स्वांश हैं। Of course, we have gopis who came with Krishna from Goloka here. कुछ गोपियाँ ऐसी हैं जो भगवान कृष्ण के साथ गोलोक से यहाँ आई थीं। These gopis, ये गोपियाँ they came with Krishna here. वो भगवान के साथ आई थीं गोलोक से यहाँ पर। There are other gopis और कुछ अन्य गोपियाँ हैं who joined Krishna from here. जो भगवान कृष्ण को इस धरती से Among who joined Krishna from here, और जो भगवान को यहाँ धरती से ज्वाइन की थी, we have Shruticharis, श्रुतिचारी, Municharis. मुनिचारी, There are two types of them. दो प्रकार की गोपियाँ हैं। They joined Krishna from here. उन्होंने भगवान को यहाँ से ज्वाइन किया था। They are the ones their husbands stopped them from going to Krishna. और इन गोपियों के पतियों ने उनको रोका था भगवान के पास जाने से। But those who came with Krishna, लेकिन जो भगवान कृष्ण के साथ आई थी उनकी नित्य प्रेयसी, nobody can stop them from going to Krishna. उन्हें कोई नहीं रोक सकता था भगवान कृष्ण से मिलने। Even those who were stopped from going to see Lord Krishna, यानी कि जो लोगों को रोकना चाह भी रहे थे, they still went to see Krishna. वो लोग फिर भी गोपियाँ गई उनके पास। By changing that body, they have the relationship with others. तो उन्होंने अपने इस शरीर के अलावा भी भगवान कृष्ण से संपर्क रखा। So they went to see Lord Krishna. और वो कृष्ण को मिलने गई। Therefore, इसलिए what is happening? क्या हो रहा है? It's a drama. यह एक नाट्य हो रहा है। Krishna is playing drama. भगवान कृष्ण बाहर रूप से एक नाट्य कर रहे हैं। It's a spiritual movie. यह एक आध्यात्मिक चित्रकारिता है। Those who are fortunate, जो सौभाग्यशाली हैं, they can participate. वह इसमें भाग ले सकते हैं। So they can see the real meaning of what is happening. और तब वो देख पाएंगे कि असल में क्या हो रहा है। So Krishna is using this word here to show what the gopis are. तो भगवान कृष्ण इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बताने के लिए गोपियाँ वास्तविकता में कौन हैं। Balavyaha, बलव्यहा, mat atmikaha. मत आत्मिकः। These gopis are directly Krishna's eternal potency. यह गोपियाँ भगवान की आंतरिक शक्ति हैं। Therefore, for someone to ask, इसलिए अगर कोई पूछता है, the Krishna is a teacher of the world, is a guru of the world. भगवान कृष्ण तो एक आचार्य हैं, एक शिक्षक हैं। What is he teaching us? वो हमें क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर? He said he has to work to show example. उनको तो एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। So what is he teaching about this example? तो वो क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर?
Krishna is showing he is a supreme personality of God. कृष्ण दिखा रहे हैं कि वो परम भोक्ता हैं, स्वराट हैं. Nobody can imitate Ishvara. जो ईश्वर हैं उनकी नकल कोई नहीं कर सकता. And nobody can question Ishvara. और जो ईश्वर हैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता. He is a supreme Ishvara. और वो तो परम ईश्वर है. There are certain things which are meant for only him. कुछ चीजें हैं जो सिर्फ मात्र भगवान कृष्ण के लिए आरक्षित हैं. No one else can do it. Only कोई Krishna उन्हें can नहीं do कर it. सकता, मात्र श्री कृष्ण ही कर सकते. Someone else does it is और कोई करेगा abominable. तो वो सजा करता. But Krishna does it, लेकिन भगवान कृष्ण करेंगे it's glorified. तो यह लीला Very auspicious, very auspicious, यह अत्यंत शुभ होगा and very purifying. और बहुत ही पुण्यवान होगा, शुद्धिकरण करने वाला होगा. Sukadeva Goswami said, सुखदेव thus गोस्वामी बोलते हैं, address, O king, हे राजन, Uddhava respectfully accepted his master's message, mounted his chariot, and set off for Nanda Gokula. इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने आदर पूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया और अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े. The fortunate Uddhava reached Nanda Maharaj's pastures just as the sun was setting, and seeing the returning cows and other animals were racing thus with their hooves, his chariot passed unnoticed. भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चारागाहों में उस समय पहुंचे जब सूर्य अस्त हो रहा था और चूंकि लौटती हुई गौएं तथा अन्य पशु अपने खुरों से धूल उड़ा रहे थे, उनका रथ अनदेखे ही निकल गया. Uddhava reached Vrindavan at the time Krishna was returning from the forest with the cows. उद्धव जी वृंदावन सायंकाल में पहुंचे थे जब गायें वापस लौट रही थी भगवान कृष्ण के साथ. But he was not seen. लेकिन उनको कोई देख नहीं पाया. He was buried in the dust raised by the cows. क्योंकि जो गौओं के खुरों से धूल उड़ रही थी उसके कारण उनका रथ दिख नहीं पाया. So he entered Vrindavan. और वो श्री वृंदावन में प्रवेश किए. Gokula resounded on all sides with the sound of bulls in wrath fighting with one another for fertile cows. With the mooing of cows, burdened by their udders, chasing after their calves, with the noise of milking and of the white cows jumping here and there, with the loud reverberation of flute playing, and with the singing of the all-auspicious deeds of Krishna and Balaram, by the cowherd men and women who made the village resplendent with their wonderfully ornamented attire. The cowherds' homes in Gokul appeared most charming, with the abundant paraphernalia for worship of the sacrificial fire, the sun, unexpected guests, the cows, the brahmanas, the forefathers, and the demigods. On all sides lay the flowering forest, echoing with the flocks of birds and swarms of bees, and beautified by its lakes, crowded with the swans, Vrndavana, dogs, and bowers of lotuses. ऋतुमयी गायों के लिए परस्पर लड़ रहे साणों की ध्वनि से, अपने बछड़ों का पीछा कर रही, अपने थनों के भार से चल रही रंभाती गायों से दूहने की तथा इधर उधर आकुलता कर रहे सफेद रंग के बछड़ों की आवाज से, बंशी बजाने की ऊंची गूंज से, उन गोपों और गोपियों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान था. गोकुल में ग्वालों के घर
यज्ञ अग्नि, सूर्य, अचानक आए अतिथियों, गायों, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की पूजा हेतु प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से अति आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे और हंस, कारंडों तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवरों से सुशोभित थे। This was that time. यह उस समय का विवरण है। Now when we enter Vrindavan, we don't see this. लेकिन अब हम वृंदावन में ये सब कुछ नहीं देखते। But it is still going on. लेकिन वृंदावन में ये अभी भी लीलाएं हो रही हैं। This is still going on. यह अभी भी चल रहा है। Because Krishna's activities are eternal. क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं शाश्वत हैं। Now it is aprakat. अब ये अप्रकट हो गई हैं। It's not physically manifest. हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। So we don't see it. इसलिए हम इनको देख सकते नहीं हैं। But there are devotees who sees it continuously. लेकिन भक्तगण हैं ऐसे जो इनको हमेशा देख सकते हैं और देखते हैं। They see this constantly. वो देखते हैं इनको हमेशा अनवरत रूप से। This is their experience. यह उनका अनुभव है। Braj is described in 5 verses. 5 श्लोकों में यहाँ पर ब्रज के बारे में गुणगान हुआ है। Inspired by the desire, potency, Icha Shakti of Krishna, who taught, let Uddhava see the splendor of my Braj. उच्च इच्छा शक्ति की प्रेरणा से भगवान कृष्ण ने यह उद्धव को दिखलाया, यह ब्रज। Krishna arranged that Uddhava should come at this time so he can see what is Vrindavan. भगवान कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उद्धव इस समय पर आए जब वो इस प्रकार वृंदावन को देख सके। 𝐤𝐬𝐬 covered the particular manifestation of Braj, which was made in grief because of separation from Krishna and undergoing the sanctuary bhavas of disinterest, depression and humility. Instead, 𝐤𝐬𝐬 showed Uddhava a typical evening in Braj in which Krishna was present, charming with the positive sentiment of joy, playfulness, greatness, eagerness and enthusiasm. योग माया ने जो वहाँ पर शोक और विरह का माहौल था भगवान कृष्ण के न होने से, उसको छिपा लिया और योग माया ने उद्धव जी को इस प्रकार का व्रत दिखाया जहाँ पर कि बड़ा उत्साह, बड़े ही वेग से, प्रेम से भगवान कृष्ण के सभी गोप और गोपियाँ अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे थे। This is very interesting. यह बड़ी यहाँ पर अद्भुत चीज देखने को मिल रही है। Very interesting. बहुत अद्भुत चीज देख रहे हैं यहाँ पर। Krishna sent Uddhava to come here because the gopis are in distress. भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को यहाँ भेजा था कि गोपियाँ विरह की अग्नि में थी। Feeling pains of separation. और वो विरह की अग्नि से डूबी हुई थी। So they were not happy. वो प्रसन्न नहीं थी। But they simply maintained themselves expecting Krishna is going to come back to see them. वो मात्र अपने शरीर को ढो रही थी क्योंकि भगवान कृष्ण आने वाले हैं। That was the mood. यह उनका विचार था। But when Uddhava entered, लेकिन जब उद्धव यहाँ पर आ Krishna showed him a different thing completely. तो भगवान कृष्ण उनको दूसरा वातावरण दिखा रहे हैं। What did Uddhava see? यहाँ उद्धव जी क्या देख He रहे हैं? didn't see what he came to do. He saw Krishna living here. He saw the experience the gopis were having when Krishna was living here. उन्होंने शोक और विरह का वातावरण नहीं देखा, उनको वह वातावरण दिखाया गया जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ यहाँ पर रह रहे थे। 𝐤𝐬𝐬 covered the particular manifestation of Braj, which was made in grief because of separation from Krishna. Krishna didn't show that to Uddhava. He showed him what Vrindavan actually is.
योग माया ने शोक और विरह के दृश्य को छिपा लिए और भगवान कृष्ण की कृपा से योग माया ने उद्धव जी को वह दिखाया जब भगवान कृष्ण स्वयं वृंदावन में थे। Krishna never leave Vrindavan. श्री कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। Krishna is still in Vrindavan. श्री कृष्ण वृंदावन में अभी भी हैं। He never leave Vrindavan for a moment. वो वृंदावन त्याग कर कभी भी नहीं जाते क्षण भर के लिए। If Krishna never leaves Vrindavan, अगर श्री कृष्ण वृंदावन से बाहर नहीं जाते, why lamentation? तो फिर शोक किस बात का है? Is it fake? क्या ये झूठा है? Is it fake? Am I saying? क्या ये झूठापन है? यहाँ पर हम देख रहे हैं Is it real? शोक, और क्या ये शोक सत्य में है? Is pretension? और क्या ये मात्र छल है? What is it? दिखावा है। Krishna never leaves Vrindavan. कि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं The जाते। gopis, the gopas are feeling pain of separation. लेकिन गोपों और गोपियों को तो विरह हो रहा है। And Uddhava is seeing अब उद्धव जी यह देख रहे हैं। the experience of real Vrindavan when they entered. लेकिन उद्धव जी जो असली वृंदावन था पहले, So, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसको what देख रहे हैं। is happening? तो फिर क्या हो रहा है? Krishna never leaves here. Krishna never leaves here. कृष्ण कभी भी त्यागते नहीं। Not even one step. कभी भी एक पद भी बांधे रखते। When Krishna was taken by Akura जब श्री कृष्ण अक्रूर जी द्वारा ले जाया जा रहे थे and Uddhava, और उद्धव जी, Sukadeva Swami told us that Krishna and Balaram climbed on the chariot सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कृष्ण बलराम रथ पर आरूढ़ हुए to go to Mathura. मथुरा जाने के लिए। The cowhead boys, they told Krishna, जो ग्वाल वाले थे वो बोले श्री कृष्ण को, Krishna, कृष्ण while we are playing together जब हम लोग साथ में खेल रहे हैं in the forest, जंगल में, when you come behind a tree, जब आप एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, we are playing together, हमारे साथ में खेल you रहे just हैं come behind a tree और आप जब पेड़ से छुप in जाते हैं, in our presence, हमारे सामने, and we know हमको पता that we है are just behind the tree आप बस पेड़ के पीछे ही in हैं, course of our play. आप खेल खेल पीछे चले गए हैं। That moment, उस समय पर, उस क्षण में it is excruciatingly painful. बहुत अत्यंत दर्द से भरा होता है ये क्षण। So what will happen to us तो क्या होगा when you go to Mathura? जब आप मथुरा चले जाएंगे? Don't go. आप मत जाइए, Don't go to Mathura. आप मत जाइए। If we cannot tolerate हम ये एक क्षण भर का विरह आप just a सहन नहीं कर second, सकते। just a second play, एक क्षण का भी हम आपसे we are playing together सहन नहीं कर पाएंगे आपका and they विरह। come behind us, आप बस पेड़ से छिपते हैं, just coming behind, हमसे यही सहन नहीं we are जाता। so disturbed. हमको बहुत तकलीफ होती है। What will happen to us तो फिर हमारा क्या होगा when you leave from जब Mathura? आप वृंदावन से मथुरा चले जाएंगे? Don't go. आप मत जाइए। And Krishna came down from the chariot और कृष्ण रथ से उतर गए and disappeared और विलुप्त हो गए with the gopis. गोपियों के साथ। Nobody's गोपियों के Krishna, सामने। Krishna came down from the chariot. हाँ, भगवान कृष्ण ने नीचे आए। Krishna and Balaram, they were already sitting on the chariot. कृष्ण बलराम बैठे थे वहाँ पर रथ में। But hearing the cowhead boys were talking कृष्ण का गढ़ वालों को सुनकर and seeing the cowhead girls were crying, और गोपियों के रुदन को देखकर Krishna came down from the chariot भगवान कृष्ण उतरे नीचे रथ से and he followed the girls back to the forest. और इस प्रकार वो गोपियों के साथ जंगल में चले गए। When Uddhava looked at when Akura looked at the chariot, और जब अक्रूर देखे रथ को, he didn't see Krishna sitting there. उन्होंने वहाँ देखा नहीं भगवान कृष्ण He को। only saw Balaram was sitting there. मात्र देखे बलराम जी बैठे हैं। So he asked Balaram, "Where's your brother?" मुझसे बलराम को कृष्ण कहाँ है? I don't know. मुझे नहीं पता। I don't know. मुझे नहीं पता कहाँ I है। didn't even know that he get down. He's not here. मुझे पता नहीं कहाँ चले गए वो। But you see, the Krishna he has come down and left him. He was sitting there alone. ने ये नहीं देखा कि भगवान कृष्ण चले गए। That is Yog Maya. यह योग माया के द्वारा That's हुआ। Yog Maya. So where is your brother? तो कहाँ है आपके भाई? I don't know. हमको नहीं पता। So Balaram came down तो बलराम जी नीचे आए। and he looked on the ground. उन्होंने देखा It नीचे। is then he saw the Krishna's footprint तब उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों को देखा and started tracing it. और उनके द्वारा And वो he went to the forest. वो जंगल में गए। And Krishna is there with the cowhead boy. और भगवान कृष्ण वहाँ Cowhead पर girls. The cowhead girls. श्री गोपी जनों के साथ They हैं were playing. और उनके साथ वो नृत्य कर रहे हैं। Balaram said, "My dear brother, let us go now. बलराम जी बोले चलिए वापस, Let's go now. चलिए अभी, Ah, they are waiting for us." अब पूरे दिन जा कर रहे हैं।
then reluctantly, लेकिन किसी तरह से, reluctantly. किसी भी तरह से, But why reluctantly? ये लेकिन ऐसा क्यों? Is anything that forced Krishna? भगवान कृष्ण को क्या कोई, Is Krishna forced by anything, by anyone? क्या उनको कोई फोर्स कर सकता है? Why reluctantly? नहीं। If Krishna doesn't want to go to Mathura, अगर भगवान जाना चाह रहे हैं मथुरा, who can take him there? तो उन्हें कौन रोक पाएगा? Who can force him to go? कौन उनको फोर्स So करता है? why reluctantly? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जा नहीं पा रहे हैं? That is the sweetness. क्योंकि यह माधुर्य है, That is sweetness. यह माधुर्य प्रेम है, That is part of the ingredient that make it sweet. और इस प्रकार यह उनके लिए जब वो So Krishna then came with the Balaram. Balaram held his hand and brought him बलराम जी कृष्ण को लेकर आए back to the chariot. वापस रथ में। By then, इस प्रकार Akrura was very, very careful अब अक्रूर बहुत ही सावधान थे that कि as soon as Krishna sat on the chariot, जैसे कृष्ण बैठे रथ पे, he didn't want the second chance, want to take second अब वो chance. दोबारा गलती नहीं करना चाह रहे थे। He started to drive the chariot उन्होंने तुरंत रथ चलाया and the gopis blocked the road. और गोपियां सामने आगे रथ They पे, were lying down. और गोपियां के सामने पड़ी थी। In the beginning, शुरुआत में the gopis were hiding. गोपियां अपने को छिपा रही थी, Don't want our relative to see that Krishna is our boyfriend. वो अपने रिश्तेदारों के सामने नहीं आ रही थी ताकि यह पता न चले कि कृष्ण उनके प्रियतम हैं। In the beginning, they were doing like that. They were शुरुआत में hiding. वो ऐसा कर रही थी, But at a stage, लेकिन एक ऐसा they स्तर आ गया, couldn't hide. वो अपने को छिपा नहीं So पाए they came out और उस सामने समक्ष आए to block Akuras. और उनके सामने उन्हें रथ को ब्लॉक कर दिया। Akura is extremely expert लेकिन श्री अक्रूर जी बहुत दक्ष हैं in driving the chariot. रथ को चलाने में, He's very experienced. बहुत अनुभवी और दक्ष हैं। That's why he was sent. That's why he was sent. इसीलिए उनको कंस में मिला था The gopis were lying on the path. और गोपियां अब पड़ी थी सामने रथ Uddhava has to सामने। drive, और अक्रूर को चलाना था। has to maneuver the gopis. अक्रूर ने रथ को किसी प्रकार से So निकाला they didn't climb on them. ताकि गोपियां उसमें चढ़ न जाए रथ में, And there were many. और बहुत सारी गोपियां Through the road. पूरा रोड Uddhava has to know how to maneuver them. और अक्रूर ने बहुत अच्छे से This सावधानी way से and this way. दक्षतापूर्वक उन्होंने रथ को निकाला And he drove out like that. So और इस प्रकार वो निकल गए बाहर। when they go to Akura Ghat, जब पहुंचे वो अक्रूर घाट में, Krishna and Balaram कृष्ण और बलराम never cross. वो अक्रूर घाट के पार They नहीं गए, never cross. वो अक्रूर घाट से आगे नहीं गए। When they go to Akura Ghat, जब वो अक्रूर घाट में पहुंचे it's a boundary between Mathura and Vrindavan. और यह मथुरा और वृंदावन के बीच की सीमा है। Akura parked the chariot. अक्रूर ने रथ को वहां पर He पार entered the किया water. और वो जल में When गए। he entered inside the water, जब वो यमुना के अंदर गए, he saw उन्होंने देखा Anantashesh अनंत शेष and Vishnu. और विष्णु। They looked on the chariot. उन्होंने वापस देखा रथ में Krishna and Balaram are sitting there. कृष्ण बलराम वहां बैठे हुए हैं Inside the water, और जल के अंदर Anantashesh, अनंत शेष Vishnu. और विष्णु। So he saw उन्होंने देखा two तो persons here. दो लोग देखा उन्होंने। Krishna Vasudev कृष्ण वासुदेव came from Mathura. जब मथुरा से आए थे, It is Krishna Vasudev या कृष्ण वासुदेव that थे went back to Mathura. जो वापस मथुरा गए। Krishna Govind, कृष्ण गोविंद who appeared in Vrindavan, जो वृंदावन में अवतार लिए थे, stopped there. वो वहीं रुक गए And Krishna Vasudev manifested और वहां से कृष्ण वासुदेव निकले and came and then he और went वो आगे मथुरा गए, to Mathura. वो मथुरा गए। Sanatana Goswami said, साधु साईं बोलते हैं Krishna went, कृष्ण गए came back, और आए वापस, went गए and came back. वापस आए, दोनों Not बातें only once, एक बार नहीं, regularly. हमेशा ऐसा Krishna goes कृष्ण जाते and he हैं come back. वापस भी आते हैं, But लेकिन to maintain the sweetness of rasa, इस माधुर्य को संभालने के लिए Krishna going and coming, भगवान कृष्ण जाते हैं और आते हैं। it is not seen to everybody. यह सबको दिखाई नहीं पड़ता, It's only going that was seen. हम बस यह देखते हैं कि भगवान कृष्ण गए And the वृंदावन। gopis manifested that.
the gopis manifested that. That's what they saw. गोपियां इसको दिखाती हैं, So they are relating to that. तो गोपियां उसको देख पा रही हैं। So we are seeing that Krishna went तो हम ये there. बड़ी देख रहे हैं कि Krishna did not go anywhere. कृष्ण वृंदावन के बाहर नहीं गए। Krishna just hid his manifestation. कृष्ण ने अपने आप को वहां छिपा लिया अपने रूप So only his few devotees can see that. ताकि मात्र उनके कुछ भक्त उनके इस रूप को देख सकें। Because the cows were in heat, Vasita, the bulls were mad, mooing loudly and fighting with each other to mate with them. Blood echoed with the sound of cows running after their new calves. Along with the sound of milking cows, there were shouts in all directions, such as, "Let the cow loose. Don't let the cows loose. Bring the cows in here. Do this quickly. Do this slowly. Bring this. Take this. Give this. Receive this." Brats also appeared splendid on account of the sound of flutes and the singing of the gopis. The performance of sacrifices and worship beautified the homes of the cowherds. इस प्रकार गाय सांड थे, वो गाय के लिए परस्पर लड़ रहे थे और बछड़ों का पीछा कर रही गाय अपने थनों के भार से तेजी से आवाज कर रही थी और इस प्रकार बछड़े अपने गाय का दूध पीने के लिए इधर उधर आकुलता से दौड़ रहे थे और बंशी बजाने की ऊंची गूंज से और गोप तथा गोपियों द्वारा जो गांव अपने गांव को सुंदर अलंकारों से सुशोभित कर रही थी, यह वातावरण हर दिशाओं में गुंजायमान था। As soon as Uddhava arrived at Nanda Maharaj's home, Nanda came forward to meet him. The cowherd king embraced him in great happiness and worshipped him as none different from Lord Vasudev. जो ही श्री उद्धव जी नंद महाराज के घर पहुंचे, नंद जी उनसे मिलने के लिए आगे आ गए। गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और भगवान वासुदेव की ही तरह उनकी पूजा की। Uddhava didn't see the pain the Jabasis were feeling when he was entering. He didn't see anything. जब उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश किए तो उन्होंने ब्रजवासियों के विरह की अग्नि को नहीं देखा, नहीं महसूस किया। He didn't see that उन्होंने यह नहीं देखा until he entered. जब तक वो वृंदावन में आ नहीं गए। After he entered, और अब जब वो प्रवेश कर लेंगे वृंदावन में, Yogmaya shows him the other side. अब योग माया उनको तो दूसरा पहलू दिखाएगी। So Nanda Maharaj received him very nicely. तो नंद महाराज ने अब उनका स्वागत किया बड़े अच्छे ढंग से, Embraced him with great happiness. उनका आलिंगन किया परम सुख के कारण Worshipped him और उनकी पूजा की as none different from Vasudev. जैसे भगवान वासुदेव की पूजा करते हैं। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Yes. Don't know how much time we have because it is 7:23. Only 8 minutes. Only 8 minutes. I had 3 questions. 3. 3 questions. This is not enough time. Okay, let's look at one first. Let's take one first. One question is from the class, like Maharaj mentioned about the mood of gopis, and Krishna never leaves the Vrindavan. Yes. And in spite of that, the gopis are lamenting for Krishna. Yes. So I'm trying to understand this from the authority like you, that whether it is the another expansion or another mood of showing the love, because in the prem there is a sambhog and vipralamba, the both melody is there, and in the both melodies, even in the Goloka Vrindavan,
the both melodies is there sometimes, Sambhog Lila and Vipralambha Lila. So is that showing to the universe that there is also the melody in the Vipralambha mood, separation mood. That is the reason the gopis we are seeing and hearing that Krishna, in the Dwarika not coming and sending Uddhava and gopis are in lamentation. Is that to make us understand the Vipralambha mood? आपने बोला कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते, लेकिन हम यहाँ देखा है कि गोपियाँ शोक और विरह की अग्नि में जल रही हैं। तो मेरी समझ में मुझे ये आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि दो प्रकार के रस होते हैं, संभोग रस और विप्रलंब रस। तो क्या विप्रलंब रस की महानता को दिखाने के लिए, उसको आस्वादन करने के लिए यह लीला की जा रही है? Yes, we have the union and we have the separation. Both are there. दो प्रकार के रस हैं, संभोग रस आपस में आना साथ में और विप्रलंब विरह का रस. And it is a constant experience. It's constant. और यह सतत अनुभव, सतत लीला है. That sometimes come together, sometimes separation. कभी साथ में आना, कभी बिछड़ना. The other day we mentioned how viraha is so important. हम लोग उस दिन देख रहे थे कि विरह बहुत महत्वपूर्ण है. Because that word maintained the prema. और वह प्रेम को अस्तित्व प्रदान करता है. So after the class, somebody asked me a question. कक्षा का मुझे पूछा था. I didn't understand what is forgot when they put the question. So she was explaining that she didn't understand it fully. उनको समझ नहीं आया बात को, पूछे गुरुदेव से. So I explained. तो मैंने उनको बताया. In union, साथ में आने से the pleasure is sweet. मधुर आनंद मिलता है. But लेकिन the pleasure of expecting that union is sweeter. लेकिन जो आनंद हमें मिलता है यह सोचकर कि अब हम मिलेंगे, यह उससे अधिक मधुर है. When we're expecting when we're going to meet, you're already planning what we're going to do, what we'll do when we meet. We'll go here, we'll do this, I'll plan like this. See, that is the mood they created the kunjas. This is the mood used in dressing kunjas. For when the Radha and Krishna will meet here, how they will enjoy, what is necessary. They plan all this together. That planning, that stage, planning, expecting, waiting, extremely sweet. तो जो श्री गोपीजन नित्य कुंज को बनाती हैं श्री राधा और कृष्ण के उनकी लीलाओं के लिए, उसके लिए वो तरह तरह प्रकार के इंतजाम करती हैं, सोचती हैं, प्लानिंग करती हैं. तो इसमें यह आनंद बहुत महान पराकाष्ठा है. Isn't it? It is sweeter. यह अधिक मधुर है. It is sweeter. Second. The second question is related to applied Krishna consciousness. Maybe it is maybe for the managerial areas and all. And my third question is also regarding the scriptures. So which one I shall ask? Applied Krishna consciousness in the managerial level or the scripture level? Less time, that's what I'm asking. I'm ready for anyone. Okay. No, because I know you are like. So. Practical maybe is better for it because we are lacking practice. Practical Krishna consciousness. Practical questions. Okay. Then I will answer that. Both are practical only. So sometimes when we are
we are in a practicing in a different level. Everyone we have the individual level, and many people can see that. Those are in the very advanced. They can see that. So sometimes when we practice Krishna consciousness, that time we definitely blessed with some mercy, like a post, like some responsibility, some responsibility, and some intimate associations with the leaders, like a president, or sometime Gurudev. And out of that, sometimes we lose our speed, and we may say something or behave such a way that we forget our stage, that in which level we are. But somehow the president or the Gurudev, they given us some opportunity, because we have some quality, that's why they given us. But in spite of that, sometimes we lost our speeds, and it could be accident. In Srila Prabhupada in Upanishad mentioned, I remember, that even in a Grand Tank road, there could be an accident, right? So in this time, when someone is seeing that, apart from the president or the guru, if some devotees also could understand and see that, so what should be that devotee's action towards that devotee who is losing the speed, how he could deal with the devotee? Does he directly tell or somehow convey to Gurudev or the president? How should we deal in this situation? आप इसको शॉर्ट में हिंदी में बोलिए। शॉर्ट दो लाइन। So ये ऐसा है, या हिंदी में क्या है, हम लोग कभी कभार गुरुदेव का और मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट का भी बहुत नज़दीक में रहते हैं, और कभी कभी हम लोग हमारे स्पीड को लॉस्ट कर जाते हैं, है ना। इतना फैसिलिटी हम लोगों को मिल जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग एक स्टेज पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग अल्टीमेट नहीं है। तो इस समय इस ऐसा सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो कैसे उस सिचुएशन को डील करना है, क्या उस डिवोटी को सीधा बोलना है? अगर हम लोग उस डिवोटी को सीधा बोलते हैं तो हो सकता है कि वो ऑफेंस हो जाए हम लोगों से और वो हमसे झगड़ा करे। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हाउ टू डील? शैल वी से डायरेक्टली टू द डिवोटी और वी वेट अंटिल कृष्णा? हाँ, क्या हम लोग उसके लिए वेट करें, और या हम लोग गुरु को या कृष्ण के लिए वेट करें कि कृष्णा एक दिन ये करेंगे, या गुरुदेव को बोले या प्रेसिडेंट को अप्रोच करें? कैसे डील करें इस सिचुएशन? It is the responsibility of the leader. The responsibility of the leader. यह जो मंदिर के नायक हैं, नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है। If he is actually a leader, अगर वो है नेता वाकई में, to see our spiritual dealings, not only our managerial dealings. तो वह इन चीज़ों को गंभीरता से देखें। हमारा जो मैनेजमेंट का संबंध है और जो हमारा आध्यात्मिक संबंध है भक्तों के साथ, We have mentioned many times. हमने बहुत बार इस बारे में चर्चा की है। Many devotees, they have a managerial relationship with their spiritual master. They don't have a spiritual relationship. बहुत सारे भक्तों का मैनेजमेंट रूप से संबंध है उनके गुरु के साथ, आध्यात्मिक संबंध कोई नहीं है, Which is wrong. लेकिन गलत है। The guru should see both गुरु को दोनों देखना चाहिए and make the correction. और सही टाइम पे सही करेक्शन भी करना चाहिए। So as we, this is what Srila Prabhupada used to do. ऐसा श्रील प्रभुपाद जी किया करते थे। When Prabhupada arrived, जब प्रभुपाद जी आते थे, the first thing is spiritual. तो सबसे पहले आध्यात्मिक चीजें होती थी। He will speak, पहले वो लेक्चर देंगे, addressing the devotee spiritually. सब भक्तों को लेक्चर देंगे अच्छा सा, After a few days, और कुछ दिनों बाद they will look in the management.
वो देखेंगे मैनेजमेंट में। Prabhupada was doing both like that. प्रभुपाद ये सब दोनों काम करते थे अच्छे से। But these days, लेकिन आजकल we look at the managerial हम सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट को and forget the spiritual. और भूल जाते हैं आध्यात्मिक आत्मीय संबंध को। It's not correct. यह सही नहीं है। We should do both. हमें दोनों करना चाहिए। Check. हमें देखना चाहिए। First, check the spiritual the spiritual practice of the disciple. जो आध्यात्मिक वातावरण है, आध्यात्मिक जो माहौल चल रहा है वहाँ का, वो देखना चाहिए। Everything material depends on the spiritual energy. कुछ भी भौतिक चीजें वो सब आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है। For us to do our material activities very nicely हमें अपने मैनेजमेंट को अच्छे से करने के लिए depends on the quality of our spiritual life. यह हमारे आध्यात्मिक जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। So the gurus should look at our spiritual side very carefully. तो गुरु को जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, जो भक्ति का अभ्यास है, उसको अच्छे से देखना चाहिए। Do the necessary things. और फिर इस प्रकार जो भी सही है वो करना चाहिए। Correction, जो भी करेक्शन देना है, chastisement, जो भी सजा देनी है, guide, जो भी सलाह देनी है, that should be done. वो भी देनी चाहिए, वो भी करना चाहिए। So in the first chapter of 10th canto, 10वें स्कंद के पहले अध्याय में 𝐁𝐡𝐚𝐤𝐬 Swami describes सुखदेव गोस्वामी विवरण देते हैं the fear of cancer. कंस का डर, कंस का भय। Vishwanath Chakravarti Thakur explained what it meant by fear of cancer. कंस का कितना भय, कंस के कारण जो भय था उसके बारे में बोलते हैं। He said that word, the fear of cancer, कंस के कारण जो भय था is very good ये बहुत अच्छा शब्द है, because, क्योंकि like we said, जैसे आपने कहा many of us have become complacent in our spiritual life, हम सब लोग अपने भक्ति में बहुत आलसी बन जाते हैं, especially in management position. खासकर जब हम मैनेजमेंट में होते हैं। Some of us are thinking that it's our merit for being a devotee. कभी कभी हमें लगता है कि यह हमको फल मिला है हमारी भक्ति का, मैनेजमेंट का पद। This is my benefit of being a devotee. और हमें भक्त होने का हमें अब परिणाम मिला है, अच्छा सा पोस्ट, बड़ी पोस्ट मिल गई। I've been practicing for 10, 15 years, 10 साल से 20 भक्ति में years. लगा था। So I've been rewarded. अब हमको कुछ मिला है, And now I have बड़ा पद। position, I have position अब now. हमारे पास पद है, So प्रतिष्ठा है, धन है। now I'm complete. अब मैं भक्ति में पूर्ण हो गया We'll be relaxing. और फिर हम आराम करेंगे। That is complacency. तो यह सही नहीं है। Fear of cancer इस प्रकार जो कंस के कारण डर का माहौल था, is when a devotee become fortunate. यह जब एक भक्त भाग्यशाली बनता है What am I doing with my spiritual life? तब सोचता है कि मेरा क्या हो रहा है मेरे जीवन का, आध्यात्मिक I'm जीवन का। not treating devotees like workers. मैं भक्तों को बस ऐसे ही वर्कर तरीके से देख रहा हूँ, Not from the heart. मैं अपने हृदय से डील नहीं कर रहा हूँ। That comes to the mind. यह हमारे जब मन में आता है And how do you say? Then we rethink और फिर इस प्रकार हम पुनर्विचार करते हैं and stop thinking that our position is our benefit. और इस प्रकार हम जो हमारी गलत धारणा है इसको हटाते हैं कि हमको पद मिल गया तो ये सब कुछ है। Or being a devotee. और लेकिन भक्त That है is a fear of cancer. और इस प्रकार एक भक्त को डर होता We है become conscious of how are we existing in Krishna consciousness. ताकि हम अपनी जो भक्ति है उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं And start taking our practice seriously. और हम अपने अभ्यास को पुनर्विचार करके दोबारा से अच्छा ठीक करते हैं। That's fear of cancer. तो यह बोलते हैं वहाँ पर To check ourselves का डर, कंस के कारण डर, so we can do our spiritual practice nicely. ताकि हम इस डर के कारण अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः अच्छे से कर सकें। That is, if one is fortunate, यह सिर्फ उसके लिए जो बहुत सौभाग्यशाली है, it will come to us like this. वो हम उस स्तर पे तब आ पाएंगे। If you're not fortunate, अगर हमारा भाग्य अभी उदय नहीं हुआ है we'll just continue like that. तो हम बस ऐसे ही करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे थे No chanting, और हमारा जब अच्छा नहीं होगा, relate with devotee mechanically. भक्तों के साथ बड़े ही शुष्क तरीके से हम अपना व्यवहार We'll रखेंगे। be acting like managers, not as devotees. हम भक्त नहीं, हमें मैनेजर तरीके नाम करेंगे। Hare Krishna. हरे कृष्णा।
this time I have to go. Sorry. We'll continue tomorrow. We'll continue tomorrow. करेंगे कंटिन्यू. Does the discussion make sense to you? Yes. Okay, thank you. Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes, now we go to the Astakams and offering of lamb. Haribol. Actually, this should be, whoever has put that should be put in a nice way. Thank you. Because this is